to move the market by 2% odd, you would require about 5,000 crores of exposure. राइट. सो अगर मुझे निफ्टी को मूव करना है तो मुझे हेवी वेट्स लाइक रिलायंस, एचडीएफसी, इन सबको मूव करना है. हाँ, तो उसको वो सब मूव करना पड़ेगा और ये सब 5,000 करोड़ में हो जाएगा. जो भी ये निफ्टी में मूव आता है दैट इज बीइंग कॉस्ट बाय दैट नेट 3-4 हजार करोड़ का नंबर. मॉर्निंग आवर्स में 24,000 का कॉल खरीदेगा, 24,100 का कॉल खरीदेगा, 24,200 का कॉल खरीदेगा, 24,300 का कॉल खरीदेगा, 24,400 का कॉल खरीदेगा. ही इज सो बिग अ प्लेयर दैट he is not simply large, he is humongous. And as an option trader, what you should do going forward? Hello everyone. I know आप सभी ऑप्शन में जो डेली स्पाइक्स आ रही है, जो वोलेटिलिटी है, उससे परेशान हो. डेली लॉसेस हो रहे हैं. इनफैक्ट इतनी बड़ी स्पाइक्स आ रही है कि कोई भी ट्रेडर मैनेज नहीं कर पा रहे. वॉल्यूम्स 50% से कम हो गए. तो इन सभी चीज पर डिस्कशन करने के लिए आज मेरे साथ है मयंक बंसल, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑप्शन ट्रेडर्स है इंडिया में. एंड ये बेसिकली एडलवाइस के साथ काम कर चुके हैं, नोमुरा के साथ काम कर चुके हैं. एंड एक फन की बात यह है कि मैंने 2016 में जब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करा था, सबसे पहला ईमेल मैंने इनको किया था, बिकॉज ये वो टाइम से ही ऑप्शन में काफी एक्टिव थे. इनको 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है. एंड आई एम श्योर ही गिव यू लॉट ऑफ इनसाइट्स टुडे कि कैसे ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, जो डेली स्पाइक्स आ रही है, हम जो नाम सुनते हैं जेन स्ट्रीट, मिलेनियम, एक्चुअल में क्या कहानी है, ये आपको डिटेल में बताएंगे. एंड कैसे इससे बचा जा सकता है, क्या सॉल्यूशंस है, एंड एज अ ऑप्शन ट्रेडर व्हाट यू शुड डू गोइंग फॉरवर्ड. सो थैंक यू मयंक इस वीडियो के लिए टाइम निकालने के लिए. आपने आई एम श्योर कि आज आप जो भी वीडियो में शेयर करोगे उससे ऑडियंस को काफी इनसाइट्स मिलेगी. एंड यू योरसेल्फ आर सच अ प्रोफेशनल ट्रेडर, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर इनसाइट्स. Thank you for having me, Sourabh. It's a pleasure to be on your show. ओके मयंक, सो बिफोर वी बिगिन, एक केन का आर्टिकल आया था विच सेज कि इंडियन मार्केट में कुछ तो एक मैनिपुलेशन चल रहा है, राइट. एंड ये कोई तो बड़ा मैनिपुलेशन हो रहा है हर एक्सपायरी पे. तो पहले आप सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट रखो कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज हैपनिंग. अगर आप एक्सपायरी डे आईवीज देखेंगे तो वो बहुत ही वियर्ड तरीके से बिहेव कर रही हैं. या तो वो बहुत ही हाई चली जाती हैं या वो बिल्कुल ही क्रश हो जाती हैं. मतलब या तो वो ऑप्शंस को बहुत ही एग्जॉर्बिटेंटली एक्सपेंसिव कर देती हैं और मार्केट पार्टिसिपेंट्स बैठ के वंडर करते हैं कि कोई इतने महंगे ऑप्शंस क्यों खरीद रहा है, या वो बिल्कुल ही सस्ती हो जाती हैं जिसमें मार्केट पार्टिसिपेंट्स को लगता है कि इस पे बेच कौन रहा है. मतलब व्हाई वुड समवन इन द राइट सेंसेस बी सेलिंग एट दीज insanely cheap prices. So ये बहुत ही वियर्ड बिहेवियर हो रहा है. एंड this behavior is peculiar to the last, I would say, 6 to 9 months. It's only started in the last 6 to 9 months. It was not happening before. So if I look back to 1 year before or 2 years before, this wasn't the case on expiry days. And even now it is not happening on non-expiry days. So it's peculiar to expiry days जहाँ पे IVs अपने normal level से या तो बहुत spike कर जाती हैं या वो बहुत ही crushed हो जाती हैं. और बहुत odd है ये. मतलब to a seasoned options trader, who's seen a lot of markets, who's seen a lot of cycles in the Indian market as well, it comes across as highly aberrant. It's something aberrant. It immediately catches your attention कि यार ये इधर हो क्या रहा है. And yeah, so that is the weird thing that is happening. Interestingly, what happens is that अब मार्केट ऑब्जर्वर को सुबह से क्या लगेगा, तो सुबह जैसे मार्केट खुलता है, ओके, ही विल सी कि मार्केट में जो ऑप्शंस के प्राइसेस हैं, जो स्टैडल्स हैं, जो आईवीज हैं, वो बढ़ती जा रही हैं. दिस इज व्हाट ही विल नोटिस. और वो अपने बाल नोचेगा या बिल्कुल परप्लेक्स्ड होगा कि भाई ये हो क्यों रहा है. और फिर लैटर हाफ ऑफ द डे में वो देखेगा यार ये तो 2% का मूव आ गया, ये तो बहुत ही बड़ा मूव आ गया. और सिमिलरली लो आईवी डेज पे ये हो रहा है कि वो बिल्कुल ही गिर जाती हैं आईवीज और वो सोचता है कि आईवीज इतनी लो क्यों है. एंड फिर वो रियलाइज करता है कि यार ये तो इसे हिलने ही नहीं दिया मार्केट को. और ये रिपीटेडली हो रहा है. ये रिपीटेडली हो रहा है कि आईवीज फ्रंट रन कर रही है मूवमेंट को. सो आईवीज पहले ऊपर आ जाती हैं और फिर कोई मार्केट को मूव करा देता है. ये आईवीज पहले ही बहुत जोर से गिर जाती हैं और फिर मार्केट को कोई बहुत ही कन्फाइंड रेंज में मतलब मैनेज करता है कि इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा. सो दिस इज वेरी वेरी perplexing. Typically, how it should happen is that when the move comes in the market, it is then that the IV should come up because the market has become volatile. That is the natural sequence of events, wherein due to
a big move in the market, there is volatility and the IVs pick up. What is happening now is that the IVs are front running movement. So IVs either go up bizarrely or come down bizarrely, and then the move comes, or then the lack of move is there. तो ये बहुत ही अजीब सी चीज हो रही है. तो मयंक, आप बोल रहे हो कि आपने ये पहले लाइक कभी नहीं देखा ऐसा होता हुए कि ये ऐसा कभी नहीं कुछ। होता है. इट इज कभी नहीं, किसी मार्केट में नहीं, किसी एसेट क्लास में नहीं. मैं बोल रहा हूँ कमोडिटीज में कभी नहीं होगा ऐसा, एफएक्स में ऐसा कभी नहीं होगा. मैं इंडियन मार्केट की बात ही, मैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव ले रहा हूँ यहाँ पे. मतलब पहली बात, पहले तो मैंने भी बता ही दिया कि इंडियन मार्केट में तो ये हो ही नहीं रहा. मतलब एक्सपायरी डेज पे जो अभी हो रहा है वो, अगर मैं 2022 की एक्सपायरीज देखूं, 2023 की एक्सपायरीज देखूं, तो ऐसा कुछ नहीं होता था उनमें. ओके. तो इंडियन मार्केट्स में तो हो ही नहीं रहा. अभी भी नॉन एक्सपायरी डेज पे नहीं हो रहा. इवन इन द करंट सिनेरियो नॉन एक्सपायरी डेज पे नहीं हो रहा. वो ऑफ लेट वैसे नॉन एक्सपायरी डेज पे भी शुरू हुआ है. पोस्ट सेबीज implementation of the reduction of daily expiries, it started happening on non expiry days as well. But that is a very very last 1 month phenomena. Okay. बट अभी करंटली मैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव ले रहा हूँ, तो ग्लोबली ये कहीं भी नहीं होता. मतलब S&P 500, नास्डैक, रसल, आप करेंसीज ले लीजिए, आप कमोडिटीज ले लीजिए, ये कहीं भी नहीं होता है. तो ये बहुत ही पेक्यूलियर सी चीज हो रही है. तो व्हाट हैज चेंज, लाइक व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज हम एक दो नाम सुन रहे थे, जेन स्ट्रीट, मिलेनियम, एंड वी हर्ड आल्सो दैट दे मेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द इंडियन मार्केट्स. सो आपको क्या लग रहा है, लाइक व्हाई इज दिस हैपनिंग एंड हाउ इज दिस पॉसिबल, ये होता कैसे? तो वो नाम तो जो आपने बोले वो बहुत ही काफी मीडिया वीडिया में भी चल रहे हैं. अब ये तो हमें पता नहीं कि कौन कर रहा है, उसका डेटा सेबी के पास होगा. बट कोई बड़ा प्लेयर है जो कर रहा है. इसमें बहुत सिंपल है. लेट्स से निफ्टी 24,000 पे ट्रेड कर रहा है. ओके. हाइपोथेटिकली. और आज एक्सपायरी डे है. तो फर्स्टली ही हैज टू ऑप्शंस कि वेदर ही ऑप्ट्स फॉर अ क्वाइट एक्सपायरी और अ वोलेटाइल एक्सपायरी. ओके. ही हैज टू ऑप्शंस. Okay, let's say hypothetically, for the sake of explanation of each of these, let's say he's opted for a volatile expiry today. Okay, and a volatile expiry means कि वो किसी एक डायरेक्शन में बड़ा हिलाने वाला है मार्केट को. ओके. मतलब या तो नीचे बहुत जोर से लाएगा, या ऊपर बहुत जोर से लाएगा. तो दो काइंड्स ऑफ एक्सपायरीज होती हैं. वो उसके मन के ऊपर है कि कौन सी एक्सपायरी वो चूज करे. एक वॉलेटाइल होती है, एक क्वाइट होती है. वॉलेटाइल एक्सपायरी में बहुत बड़ा मूव आने वाला है, डायरेक्शन का हमें पता नहीं है, वो उसे पता है क्योंकि वो लाने वाला है वो मूव. और क्वाइट एक्सपायरी में वो हिलने नहीं देगा. तब लेट्स आई विल कवर ईच वन इन ग्रेटर डिटेल. तो वॉलेटाइल एक्सपायरी में क्या होता है कि वो, लेट्स से उसे ऊपर लेके जाना है, उसने उसने डिसाइड किया कि आज मैं मार्केट को ऊपर लेके जाऊंगा. ठीक है। तो वो मॉर्निंग आवर्स में, लेट्स से मार्केट 24,000 पे ट्रेड कर रहा है. ओके. वो मॉर्निंग आवर्स में 24,000 का कॉल खरीदेगा, 24,100 का कॉल खरीदेगा, 24,200 का कॉल खरीदेगा, 24,300 का कॉल खरीदेगा, 24,400 का कॉल खरीदेगा. वो इतने कॉल्स खरीदेगा कि ऑप्शन की आईवी, मतलब ही इज सो बिग अ प्लेयर दैट ही इज नॉट सिंपली लार्ज, ही इज ह्यूमंगस. बेसिकली ही इज सो लार्ज दैट द एंटायर वॉल सरफेस कम्स अप. इतना वॉल्यूम जो कि इतना डीप है हमारा, मतलब इंडियन ऑप्शन स्पेस इज प्रीटी डीप एंड ऑन एक्सपायरी डेट इज वेरी वेरी डीप. But he trades such large quantities that the entire IV service comes up. Okay, so So now, when you say humongous, is there a number to that? Like how big? Like how much money does he have? Like billions of dollars or few millions? वो उस पे मैं आता हूँ मगर जो ऑप्शन बाइंग जो मैं अभी बता रहा हूँ, हम्म, उसके लिए तो कुछ ज्यादा, उसके लिए सिंपली हैज टू बाय प्रीमियम. तो उसके लिए कुछ बहुत ज्यादा नहीं हाई चाहिए। अमाउंट ऑफ मनी, मतलब उसके लिए ठीक। बहुत ज्यादा उसको ऐसा नहीं है कि उसे बहुत कैपिटल चाहिए ओके। ये हाँ। ऑप्शन प्रीमियम बाय करने के लिए. अभी वो ठीक। सिंपली, लेट्स से उसने डिसाइड किया है सुबह को कि वारंट एक्सपायरी कराने वाला हूँ, एंड द मूव इज गोइंग टू बी ऑन द अपसाइड. सो ही विल बाय अ लॉट ऑफ calls now. 24, 24, 100, 24, 200, 300, 400. Okay. He'll buy all these calls. Now 24, 400 call will be very, very cheap. It will be maybe 3, 4 rupees or whatever in the morning hours. He will keep buying. He will keep buying in the morning hours till, let's say, 12 o'clock, 12:30 and all, till about this time. Okay. And then once he's bought all this, once he's set his options positions up, he then creates the move in the index. Okay. Now this can be done in a couple of ways. He can either move the cash underlying itself, okay, which is the stocks, not futures, the cash stocks. Okay. He can either move them directly, or he can use Nifty forwards, long call, short put, to hit delta in the market. And I would think to move the market by 2% odd, you would require about
5,000 crores of exposure. Okay, And this is so about in for the case, Nifty. yeah, for This, the Nifty, I'm talking about Nifty. Why I say this also has a rationale behind it, because if you see the daily net FII plus DII numbers, net I'm talking, okay, yeah. नेट, जिसकी वजह से पूरा एक दिन का निफ्टी का मूव आता है, दैट इज टू द ट्यून ऑफ 3,000 4,000 करोड़ ऑन अ Okay. रेगुलर बेसिस। उससे ज्यादा होते नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कितना बाय हुआ कितना सेल हुआ, आई एम टॉकिंग अबाउट बाय माइनस सेल। ये जो Yes. नेट अमाउंट है, ठीक है, वो बाय होगा 1 लाख 2 लाख करोड़ के एक्सटेंट तक, 1 लाख 1.5 लाख करोड़, सेल भी होगा 1 लाख 1.5 लाख करोड़ के एक्सटेंट तक, मगर जो नेट नंबर है वो 3,000 4,000 करोड़ ही रहता है। तो बेसिकली जो भी ये निफ्टी में मूव आता है, दैट इज बीइंग कॉस्ड बाय दैट नेट 3-4 हजार करोड़ का नंबर, जो जो नेट है, ओके, उससे वो मूव आ रहा है। सो अगर कोई इतना ही मनी, in case someone can pump in just this much amount of money for a few hours, then he has the ability to move Nifty. He has the ability to move Nifty for, let's say, a couple of hours. Okay, so this is all that is required. मतलब 3-4 हजार करोड़ से जो भी निफ्टी का डेली मूव आता है वो आ जाता है। अगर वो उतना ही पैसा और डाल दे, तो जो भी वो मूव लाना चाहता है वो उसके थ्रू ला पाएगा। 4-5 हजार करोड़, लेट्स से अगर बड़ा मूव लाना है तो 5 हजार करोड़ में भी। तो मैं what I'm like my question is कि Nifty is a constituent of 50 stocks, right? तो अगर मुझे निफ्टी को मूव करना है तो मुझे हेवी वेट्स लाइक रिलायंस, एचडीएफसी इन हाँ सबको तो मूव करना है। हाँ हाँ, तो उसको वो सब मूव करना पड़ेगा, और ये सब 5,000 करोड़ में हो जाएगा। ओके। आई विल कम टू द फैक्ट दैट, सी, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी मूव्स निफ्टी में ऑलरेडी आ रहे हैं, लेट्स से निफ्टी ऑन अ रेगुलर डे 0.5% हिला है, ओके, कोई नॉर्मल डे पे, ओके, तो उस दिन आप अगर निफ्टी के नेट फ्लोज देखोगे, नेट फ्लोज वो 2,000 करोड़ ही होंगे। ओके, ओके। तो उस 2,000 करोड़ से ही जो भी हुआ है, मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा बाय सेल किया है, बट एंड एंड उस दिन 2,000 करोड़ का इनफ्लो हुआ है, जिसकी वजह से निफ्टी आधा टका ऊपर है। तो वो नेट जो अमाउंट है वो इतना बड़ा है नहीं, मतलब जो आपको, जिससे डेली का मूव आता है, इट इज नॉट ऑल दैट बिग एन अमाउंट। सो सिमिलरली अगर उसको हिलाना किसी, इफ एन इंडिविजुअल हैज डिसाइडेड दैट इज गोइंग टू मूव the benchmark index by a large amount, then he will require somewhere around that number itself, क्योंकि वही number causes the moves that come on a daily basis. So if he has that much AUM, okay, and I will come to the fact that he does not even require that much AUM. I will just cover that. But hypothetically, let's say he's moving the cash index. Okay, then he just requires around 5,000 crores to move the index by 2%. And that would suffice, I guess. What he can also do, in case someone has, let's say, access to restricted capital and does not have 5,000 crores, because 5,000 crores is greater than half a billion. So it's, while it is still not all that big, because a lot of large funds like the names you mentioned have access to that. It's not all that big, but still it's not all that small also. But it's important to note that he does not need to take the 5,000 crore. He just, he does not need 5,000 crores of AUM to take 5,000 crores of exposure. He Yeah. needs to just take 5,000 crores of exposure, Yes. which he can do in the, you know, via Nifty futures or Nifty forwards also. Right. So in case with 1,000 crores in practically 1/5 the amount, he can Yes. take, with 1,000 crores, he can take 5,000 crores worth of exposure, which will move the Nifty. Nifty movement is linked to the exposure that is taken in the market. It does not matter कि आप वो exposure कितने एक्चुअल कैपिटल से ले रहे हो। अब कैश मार्केट में करोगे तो ऑब्वियसली आपको 5,000 का 5,000 ही डालना पड़ेगा। बट अगर आप फॉरवर्ड्स में करो, लेट्स से यू बाय निफ्टी फ्यूचर्स, okay, for instance, then you don't need 5,000 crores to take 5,000 crores exposure. You can take 5,000 crores exposure in 1,000 crores or 800 crores itself, right? Similarly, what he can do is he can buy the call and sell the put, which is a synthetic Yes. a Yeah. synthetic future for that expiry. So let's say he picks a call of 24,000 strike. He can buy the call of 24,000 strike and sell the put of 24,000 strike, which creates the forward for him. This will again consume sort of lesser AUM to take 5,000 crores exposure. I say forwards. I mentioned forwards or this synthetic future here because monthly futures have a very high STT. So a lot of people are reluctant to touch monthly futures, and I would guess even the manipulator would maybe want to do it via the synthetic future. And there's a Yes. reason. While this is a small reason, the cost, transaction cost is higher for monthly futures. The beauty of forwards is that he does not need to square it So off. I'll just explain to the audience that
this हाँ is हाँ the हाँ synthetic is based on put call parity. So if you buy any stock and you buy the put, that is equal to call. So अगर आपको किसी स्टॉक का फ्यूचर बनाना है तो यू कैन बाय अ कॉल एंड सेल अ पुट. सो ये बेसिकली एक लॉन्ग फ्यूचर हो गया है. तो अगर आप इसको करोगे तो ये दो पोजीशन यू गेट सेम पे ऑफ फॉर फ्यूचर. So which is basically based on put call parity. But so when he's talking about forwards, he's saying that अब synthetic futures because monthly में एचडी ज्यादा है तो ये players weeklies में ये positions बना रहे हैं. Yes man. हाँ, वीकलीज में वो टिपिकली सभी लोग वीकली से ही करते हैं, क्योंकि वो उसके एसटीटी जाना है, तो दे विल गो लॉन्ग अ कॉल एंड शॉर्ट अ पुट इन केस दे वांट टू हिट डेल्टा, राइट? एंड द ब्यूटी ऑफ फॉरवर्ड्स दो इज दैट ही डज नॉट नीड टू स्क्वायर इट ऑफ. तो अभी क्या है कि लेट्स सी डज ही बायज कैश. ओके, नाउ ही इज लेफ्ट विद कैश एट द एंड ऑफ द डे. He's expired his options positions in the money. जो भी उसने 24,000 का कॉल, 24, 100, 200, 300, 400 का कॉल उसने खरीदा है. Okay, I think I missed one part. So basically, पहले वो options खरीदता है, in the morning hours, and then he moves the market. He moves the market, which can have multiple ways. One is cash, as I was mentioning. The other could be forwards, nifty forwards. But he moves the market. He will take it to 24,500, which is a bizarre, which is a very steep, will be a steep move. In a couple of hours, Nifty would have moved 2%, and people would be like, okay, now we understand why the IBs were high. Someone was clearly planning this, right? It's almost like a revelation, like an Yes. Inception movie, now we understand what was happening back then. And people understand that there is mischief at play because it is so blatant. ठीक है, तो वो पूरा उसे इन द मनी करा देता है. 24,100 कॉल उसने खरीदा होगा 15-20 रुपए में, या जो भी 20-25 रुपए में, वो हो गया 375 रुपीज, मतलब 400 रुपए इन द मनी. 25, 400 - 25, 375 उसने पॉकेट कर लिया पर कॉल, एंड यू वुड बाय लैक्स एंड लैक्स ऑफ सच कॉल्स. तो वो ऐसे ये करता है, ये मैकेनिज्म है उसका, कि पहले वो ऑप्शंस पोजीशन एस्टैब्लिश करता है और फिर वो मार्केट हिला देता है. मार्केट हिलाने के लिए अब एक दो तरीके हैं, एक तो कैश से ला दो या फॉरवर्ड से ले लो. वो कुछ भी, मतलब वन कैन डू व्हाटएवर वन वांट्स, इट डज नॉट रियली मैटर. बट उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि पहले मैं ऑप्शंस बिठा दूं और फिर मैं मार्केट हिला दूं. इट इज अ क्लासिक केस ऑफ मैनिपुलेशन वेयरइन you set your options, you set your derivatives positions up, and then move the index such that all those derivatives positions end up in the money. So This is man, the see why volatile this case. is happening, you like kind of explain, but my point is because आप भी अग्री कर रहे थे कि लास्ट 6-7 महीने से ये ज्यादा होने लग गया. पहले वीकली हाँ जब हाँ. चालू भी थे तब इतना नहीं हो रहा था. नहीं 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 बट इन लास्ट नहीं, फ्यू होता ही नहीं मंथ्स. था, होता ही नहीं था. वो बहुत ही लॉजिकली बिहेव करता था सब कुछ. इट्स नॉट दैट इट यूज्ड टू हैपन at lesser frequency earlier and it's now happening at higher frequency. That is not the, it was not happening, it should not happen. It is not statistically, mathematically, on the हाँ. basis of options theory, it should not happen. What is happening now. Earlier, what would happen would, earlier पहले ऐसा होता नहीं था, और जो भी होता था, it would perfectly align with options theory, it would perfectly align with statistics, it would perfectly align with options pricing, how options are supposed to be priced. अब जो हो रहा है, there is no explanation. It is purely someone's willful, मतलब उसके जो मन में वो कर देगा. मतलब it's whimsical. It's entirely whimsical. Okay, so like, is it so easy to move the market? Like, because 1,000 crores, like I'm sure like many funds have access to these funds. So is it so 1,000 easy for crores इतना them बड़ा to? अमाउंट नहीं है. हाँ, 1,000 crores इतना बड़ा अमाउंट है नहीं. मतलब a lot of people have access to 1,000 crores. A lot of funds at least. और जो आप funds के नाम ले रहे थे उनके पास तो like हाँ. they have AUM to the tune of 5 lakh crores. तो उनके लिए 1,000 crore तो peanuts है. मतलब it's, if you Yeah. simply Google their AUMs, it's to the tune of 60 billion USD. That हाँ. is the magnitude of AUMs. It's not 1 billion, 2 billion, it's 60 billion USD. So even if they put a fraction of the books in India, that would more than suffice to move India. And as I'm saying, you don't need half a billion. You can do it with Yes. a fraction of that as well, via futures or forwards. So maybe Indian markets, like, have you seen, because you have traded US markets, you have traded commodities, like, have you seen this behavior only in Indian markets? Like, why are Indian markets like can be manipulated so easily, and why not The- same can't be done in other markets? This is a very nice question. So the reason is simple. So basically क्या है कि इंडिया में derivatives बहुत liquid है, and there is a very high volume of derivatives that are happening. But the net amount of transaction that is happening in the cash market, or the net inflow or outflow that is happening on a daily basis in the entire equity segment is not high. So क्या है कि डेरिवेटिव मार्केट में आप लेवरेज ले सकते हो. यू कैन बाय ओटीएम कॉल्स, जो कि बहुत सस्ते में आपको मिल जाएगा.
एंड यू कैन बाय ह्यूज क्वांटिटीज बिकॉज देयर इज वॉल्यूम। अब बहुत करोड़ों वॉल्यूम्स होते हैं, ओके, यू कैन सी द वॉल्यूम्स ऑन एनी एक्सपायरी Yeah. डे, दे आर इन करोड्स, ओके। तो आप उसमें बहुत हाई एक्सपोजर ले सकते हो ओटीएम कॉल्स में, और मतलब जैसे 24 आप जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था, 24 300 का कॉल, 400 का, मतलब बहुत बहुत जबरदस्त एक्सपोजर ले सकते हो उस पर, क्योंकि ऑप्शंस मार्केट बहुत लिक्विड है। बट जो ओवरऑल डेप्थ कैश मार्केट की है, ओके, कैश मार्केट उतना लिक्विड नहीं है। तो बेसिकली आप ऑप्शन से पोजीशन बिठा सकते हो और फिर कैश मार्केट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो। मतलब जो नेट नेट इंडिया में इनफ्लो या आउटफ्लो होता है जिससे वो मार्केट हिल रहा है, दैट इज नॉट वेरी लार्ज, एंड यू वुड मेक अ डिस्प्रोपोर्शनेट, सो यू कैन, यूजिंग दैट नॉट सो large amount, you can move the index and make disproportionate sums of money in the long options that you hold. The reason behind this is as I've just explained कि derivatives market इंडिया का बहुत डीप है, बट जो कैश मार्केट है और जो मतलब जो नेट नेट इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो आप उसमें बहुत ज्यादा पैसे बना सकते हैं और इसको हिलाने में आपको इतना पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। Okay, so you're saying कि it's like these moves are possible for the funds to generate because इंडिया में एक यस यस, डेरिवेटिव मार्केट बहुत लिक्विड है, बट एज अ बहुत लिक्विड ट्रेडर जो इनके ऑपोजिट साइड पे है, आर देयर एनी है। पैटर्न्स? बिकॉज आप तो इतने टाइम से ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, इनफैक्ट मोर देन जस्ट प्राइसिंग यू लुक एट आईवीज वॉल्स क्यू सब कुछ आप देखते हो, हाँ कुछ हाँ हाँ पैटर्न्स हाँ है हाँ। कि विच कैन लाइक इन द मॉर्निंग ओनली इट कैन गिव यू आइडिया, अच्छा आज ये शायद से मार्केट को मूव करेंगे या तो आज की एक्सपायरी ये क्वाइट ये करेंगे? ये बहुत ऑब्वियस है। बेसिकली क्या हो रहा है कि see, the fund or whoever the manipulator is has to tell his size, has to tell his side, because he has to purchase or sell options. Okay, वो यस. परचेज ऑप्शंस करेगा तो आईबी ऊपर आ जाती है, वो ऑप्शंस बेचेगा तो आईबी गिर जाती है। ओके, तो अगर आईबी बहुत ऊपर जा रही है तो काफी टेल साइन है कि मतलब डिस्प्रोपोर्शनेटली ऊपर जा रही है जो जानी नहीं चाहिए, तो टेल साइन है कि मैनिपुलेटर एक्टिव है। और अगर आईवी जोर से गिर गई है तो वापस टेलटेल साइन है कि मैनिपुलेटर फिर से एक्टिव है क्वाइट साइड पे। मतलब पहले केस में वॉलेटाइल साइड पे एक्टिव है, दूसरे केस में क्वाइट साइड पे एक्टिव है। तो ये टेलटेल साइंस है, बट अभी करंटली हो ये रहा है कि पीपल आर ट्राइंग टू फ्रंट रन द मैनिपुलेटर। तो थोड़ा सा कुछ आईबी में नेचुरल डाउनटिक भी आता है जो नेचुरली आ गया मार्केट में, तो लोगों को लगता है कि मैनिपुलेटर आ गया है। एंड पीपल, prop traders, a lot of prop traders, retailers, they jump thinking it is the manipulator and they crush the IVs, while the manipulator might not have entered only till then. वो अभी देख रहा है जो भी कर रहा है वो। So a lot of people want to align themselves in the direction of the manipulator, but उसमें कभी कभी क्या होता है कि मैनिपुलेटर आया भी नहीं होता है, ही इज नॉट टोल्ड हिज साइड, बट पीपल हैव assumed at their end कि he is come in and he's told his side, and then they start piling on one on top of the other, कि एक ने बेचा फिर आईवी थोड़ी और गिर गई, फिर ऑडो को लगा कि मैनिपुलेटर आ रहा है, फिर आईवी और गिर गई, फिर ऑडो को लगा मैनिपुलेटर आ रहा है कि आ रहा है, फिर आईवी और गिर गई। तो ये भी हो रहा है। बट मतलब बाय एंड लार्ज अगर आपको डिस्प्रोपोर्शनेट फॉल इन आईवी दिखे या डिस्प्रोपोर्शनेट राइज इन आईवीज दिखे, तो जहां पे ड्रॉप है वहां पे निफ्टी काफी लाइकली है कि क्वाइट रहेगा, और जहां पे अपटिक है, जहां पे अपटिक नहीं, मतलब अपटिक नहीं कहेंगे उसे, मतलब एब्सोल्युटली बिजार लेवल्स पे आईवी चली गई है, मतलब वो मूव आने वाला है फॉर द ऑडियंस। ओके, सो बेसिकली यू हैव टू, अगर आईवीज में स्पाइक ज्यादा आ रहा है या कोई बहुत क्रश आ रहा है तो यू हैव टू, तो अगर बहुत स्पाइक आ रहा है तो चांसेस है कि आज एक कोई बड़ा डेल्टा मूव आ सकता है। नहीं, हमने काफी हाँ हाँ, एक्सपायरीज में देखा है कि सुबह से प्रीमियम बढ़ना चालू हो रहे हैं, 12 बज गई, 1 बज गई, प्रीमियम बढ़ते जा रहे हैं, देन वो मूव सडनली आता है। वो क्लासिक मैनिपुलेटर है। देयर इज नो ऑप्शन थ्योरी, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। इट इज someone building positions knowing what is going to come, and he knows what is going to come because he is the one who's going to do it, मतलब he knows it कि वो आ रहा है। he's it's very frequent, and we are talking about or at least in this discussion we ended up discussing nifty sensex, but it's happened on every underlying, you know, when they existed, like mid cap, fin nifty, bank nifty, सब में वो होता था। so उसे पता है कि वो क्या करने वाला है, उसके हिसाब से वो कर देता है, फिर हिला देता है या क्वाइट करा देता है। सो लाइक द ट्रेडर हु आर लाइक बेसिकली रिटेल ट्रेडर्स, राइट, ये इससे बहुत परेशान है, राइट, बिकॉज 10 की चीज 500 हो रही है कॉल साइड, एंड समटाइम व्हाट हैपेंस, जो कॉल के साइड मूव आने के बाद वापस पुट साइड में सिमिलरली वायलेंट मूव आता है। तो हाँ 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 हाँ, मतलब मैं तो सी मैनिपुलेशन में कोई खास लॉजिक, अब अगर आप मैनिपुलेटेड रेजीम में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कोई खास लॉजिक बचता नहीं है। आप तो क्या मैं तो करना सजेस्ट चाहिए एज अ करूंगा आप ट्रेडर मनी। जो जिसका फुल टाइम ही ट्रेडिंग है, लाइक who's been trading option like yourself, like who's your bread and butter is option trading, so how do we adapt ourselves कि अब क्या करना चाहिए? नहीं तो आपको एक्सपायरी डे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए कायदे से, तो मतलब जीरो यू डीटी शुड एंड अवॉइड एक्सपायर, इट।
You have to stop हाँ, zero DT expiry trading. you should stop it. You should stop it. It's not ideal for you to do it. You should focus on other tenors. And it's entirely possible that you don't make the required money that you are expecting earlier, from zero DT options now. So then you Yes. might have to even reconsider whether this now in the changed sort of lower revenue regime is still something that you want to do, is still attractive for you as a career. So you have to question yourself that. Well, see, actually, what is not to scare the retail traders, but what is happening is that after the discontinuation of daily expiries by SEBI, the manipulator has actually moved into non-expiry days also. So on non-expiry days, while he's created the move only once, but what happens is that in case he's opting for a volatile expiry on Thursday, which is nifty, then the premiums he starts building the premiums from Monday itself. तो वो नॉन एक्सपायरी डेज पे भी लेट्स से कोई स्ट्रैडल सेल कर रहा है या जो भी ओटीएम कोई सेल करके बैठे हैं, जो भी वो करके बैठे हैं, उनके भी लॉस हो जाएंगे अगर वो उसने डिसाइड किया कि वो थर्सडे की एक्सपायरी में वॉलेटाइल करने वाला हूँ, क्योंकि वो प्रीमियम ऊपर जाने लग जाते हैं, अल्टीमेटली वो स्टॉक आउट हो जाएंगे। यस मैं आई थिंक इसका एक मेजर रीजन ये भी है कि इंडिया में एक स्ट्रैटेजी है 920 स्ट्रैटेजी, वो इतनी पॉपुलर हो गई कि एवरीवन वाज बेसिकली सुबह 920 पे आओ, कॉल पुट दोनों बेचो एटीएम, एंड like everyone's following it, so like the manipulator also knows कि यार सबके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे है, सब लोग ने यही स्ट्रैटेजी बेचा है, so for them वो हाँ हाँ हाँ, स्पाइक्स क्रिएट करना भी वो तो इजी। सिर्फ वो हाँ हाँ वो सो ये भी एक जबकि मैं इससे फुली एग्री नहीं करता, बट ये भी पार्टली थ्योरी चलती है कि मैनिपुलेटर खुद नहीं लाता, वो अपने आप हिल जाता है क्योंकि वो स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं। बट यस मुझे ये अनलाइकली लगता है क्योंकि सी इंक्रीजिंगली क्या हो रहा है ना, लोग कवर करके सेल कर रहे हैं, लाइक लेट्स से पीपल हैव सोल्ड 24,000, दे विल कवर विद 24,300 कॉल और 23,700 पुट, दे विल कवर एंड सेल बिकॉज दे नाउ दे हैव बीन बर्न्ड मल्टीपल टाइम्स नाउ इन द रीसेंट पास्ट, इन द लास्ट 6 मंथ्स, दे नो कि एक मैनिपुलेटर आता है और हमारे सारे स्टॉप लॉस खा जाता है, राइट? सो दे ऑफन, एटलीस्ट as far as I know, मतलब people have started covering and trading, मतलब वो कवर करके ताकि ऑटो स्टॉप लॉस, सो टू से, कि ऑटो मतलब आपने 24,000 का स्ट्रैडल सेल कर दिया, कॉल पुट सेल कर दिया, आपने कॉल को कवर कर लिया 24,300 से, पुट को कवर कर लिया 23,700 से, तो अब आप ऑटो कवर हो, 300 पॉइंट ही है, उससे ज्यादा आपका नुकसान हो ही नहीं सकता। तो ये लोग करने लग गए हैं नाउ। अगर ऐसा करने लग गए हैं तो अब लोगों को स्टॉप लॉस तो बुक करना नहीं है क्योंकि वो तो ऑटो कवर्ड है, राइट? सो अगर ये थियरी होती कि इसके और भी मेरे इश्यूज हैं इस थियरी में, मतलब एक इशू ये है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर लोगों के स्टॉप लॉसेस से ही मूव ट्रिगर हो रहा होता, तो अब तो लोगों के स्टॉप लॉस आ नहीं रहे, तो अब जो मूव्स आ रहे हैं वो लेसर मैग्नीट्यूड के आने चाहिए थे एज कंपेयर टू अर्लियर, पर ऐसा हुआ नहीं है। इनफैक्ट मूव्स के मैग्नीट्यूड बढ़ते ही गए हैं, वो दो दो परसेंट मूव्स आने लग गए हैं, पहले 1%, 1.25% आते थे, वो 2% आने लग गए हैं। तो मुझे अनलाइकली लगता है कि इट्स वो तो हो ही रहा होगा कि कुछ लोगों के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो होंगे, but major cause of the move to me seems unlikely that it is just the stop loss triggering, which is leading to the move by and of itself. I think someone is creating the move deliberately. इसका एक और इशू ये है कि वो इतनी हैवी क्वांटिटीज में अगर ऑप्शंस बाय कर रहा है कि वो पूरा आईवी सरफेस ऊपर नीचे लेके जा रहा है, तो ही वुड नॉट, मतलब इफ आई वर हिम आई वुड नॉट वांट टू रिलाई ऑन द एक्शंस ऑफ अदर पार्टिसिपेंट्स। मैं चाहूंगा कि मैं इतना प्रीमियम बाय कर रहा हूँ, ओटीएम प्रीमियम बाय कर रहा हूँ, कि मैं थोड़ा श्योर हूँ कि क्या होने वाला है। रिलाइंग ऑन दी अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक्शंस की वो ये करेंगे वो करेंगे, वो थोड़ा सा यस लूज है, मतलब इट्स डज नॉट गिव यू एज मच कंफर्ट एज the comfort you would get in case you were creating the move. So while this theory has been floating around, I think it's not this. I think he takes the exposure. ओके बट सो उस नाउ एक्सपोजर लेने के चक्कर में लोगों के स्टॉप लॉसेस तो हिट होते ही होंगे। तो एज अ ट्रेडर जो लाइक जिसका काम ही ऑप्शन ट्रेड करना है, राइट, एंड एज यू राइटली पॉइंटेड आउट लास्ट 6 मंथ्स में लाइक पर्सनली वी हैव आल्सो फाइंडिंग इट डिफिकल्ट। मैं जो काफी लाइक ट्रेडर से बात भी कर रहा हूँ, एवरीवनस फाइंडिंग इट डिफिकल्ट कि यार पैसा जो पहले बनता था नहीं आ रहा, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी एक्सपायरीज लाइक आपके स्पाइक्स आ रहे, कुछ आ रहे। तो एज अ ऑप्शन ट्रेडर अब व्हाट इज द प्लान लेफ्ट, बिकॉज यू कांट फाइट दीज गाइस एंड जीरो डीटी तो ट्रेड कर नहीं सकते, बट यू आर सेइंग कि एक एक्सपायरी नॉन एक्सपायरी डे पे भी मैनिपुलेशन किया एंड लाइक दे कैन मूव डू द मैनिपुलेशन देयर आल्सो, so what is हाँ, तो with देयर इज option नो pricing, स्पाइक। so what should a trader do in this scenario में जो options actively trade कर रहा है, बेसिकली स्प्रेड्स में काम इट्स करना अ वेरी, चाहिए, पोजिशनल करना चाहिए, इंट्राडे? नहीं कुछ काम नहीं करेगा अगर वो रेगुलरली नॉन एक्सपायरी डेज में भी एंटर करने लग गया है, तो आप कभी भी, आपका कुछ काम नहीं करने वाला है। यू हैव टू आइडियली वांट, द ट्रेडर शुड वांट टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द मैनिपुलेटर।
places his actions in the market and align himself with that. That is the only thing which is left. क्योंकि उसके अलावा वो कुछ होगा नहीं। अगर वो नॉन एक्सपायरी भी करे, लेट्स से मंडे को वो बेच रहा है स्टार्टल, जो भी रिटेलर्स हैं या जो भी ऑप्शन ट्रेडर है, वो अगर मंडे को स्टार्टल बेच रहा है, मंडे को ओटीएम्स बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है वो, और उसकी आईबीज ऊपर आने लग गई, तो चाहे मूव से वो हिट ना हो, वो आईबीज से हिट हो जाएगा, आईबीज में उसको लॉस हो जाएगा, काफी वेगा लॉस हो जाएगा उससे। तो ओके। उसके पास कोई जरिया नहीं है इसे अवॉइड करने का। उस एक एक बहुत अच्छा जरिया और जो बहुत आसान भी नहीं है, वो ये है कि आप मैनिपुलेटर के साथ अलाइन कर लो। मतलब align yourself with the manipulator, meaning that in case you can figure out what the manipulator is doing, then start doing that. Like in case the IVs are high, you can expect a violent move and buy starters now. Buy a startle at 200 rupees in the morning. That which is very, very tough, by the way. So it goes against all natural instincts which people would have तो developed over मयंक time. जनरली एज यू सेड ना कि कितनी बार क्या होता है, मॉर्निंग 30 मिनट्स में वो प्रीमियम्स 50% ड्रॉप हो जाता है। कितनी कुछ कुछ एक्सपायरीज, एंड कुछ एक्सपायरीज वो मॉर्निंग से ही दे स्टार्ट स्पाइकिंग। हाँ, वो खींचता है, वो बेसिकली वो आ रहा है ना, वो या तो खरीद रहा है या बेच रहा है, बट वो भी चेंज करता रहता है, ऐसा नहीं है कि वो भी। सो ही आल्सो नोस, सी फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव ही हैज टू आल्सो बी एबल टू बिल्ड पोजीशंस इन केस पीपल फ्रंट ऑन हिम। ओके, ही स्टार्ट, लेट्स से ही स्टार्ट्स बिल्डिंग द मॉर्निंग आवर्स, लेट्स से 9:15 पे वो स्टार्ट करता है और जो भी 11 11:30 तक वो बिल्ड करता रहता है अपना। अब अगर लोगों ने उसे फ्रंट रन कर लिया, लोगों को लगा क्वाइट एक्सपायरी है, लोगों ने उसे पहले ही बेच दिया और आईवीज कम हो गई, तो उसके पास भी बहुत कम, बहुत छोटा स्टार्टल बचा है बेचने के लिए। मतलब ही हैज टू सेल एट अ वेरी लो प्रीमियम एंड ही वोंट लाइक दैट, सो ही हैज टू कीप पीपल गेसिंग। Okay, and which is why of late, since people would crush the IVs directly on expiry days, he moves the expiry, even on quiet days, he will move it a little so that the IV stays slightly elevated, so that he can sell at good premiums and then ultimately settle wherever he wants. मतलब जहां भी उसको सेटल कराना है, ultimately market उधर ले आएगा, क्योंकि वो तो उसके पास पूरा ही, he has the power to literally dictate where he wants the expiry to be. तो वो थोड़ा हिला देता है, मतलब हिलने देता है रादर, ताकि थोड़ी सी वॉलिटिलिटी क्रिएट हो जाए, थोड़ा सा प्रीमियम आ जाए और उसको बेटर प्राइसेस पे बेचने को मिल जाए। अगर लोगों ने फ्रंट एंड से करना शुरू कर दिया, तो उसके लिए कुछ बचता है, बिकॉज ही हैज टू ट्रेड हाई, ही वांट्स टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, सो ही हैज टू ट्रेड हाई वॉल्यूम्स, so he wants an okay at least straddle price to stay for an elongated period, because he can't, unlike the retail traders who can build at 9:20 or whatever, like immediately in 1 minute, he can't build in 1 minute. He's selling lakhs and lakhs of, well, it can be crores of options. Okay, so he can't build in 1 minute. It's not possible only. So he wants the straddle to, मतलब he does not want to make it obvious कि quiet expiry, क्योंकि फिर front run करके वो straddle बिल्कुल ही गिर जाएगा. He हाँ। has to keep it slightly confusing so that he gets an okay price to sell. Similarly for the long side. ओके मैम, रियली इंसाइटफुल। तो मयंक ये जो आर्टिकल कैन में आया था, उसके बारे में स्पेसिफिकली डिस्कस करते, बिकॉज इट हैज कमिंग इन लाइट, लोगों के लाइट में भी आ रहा है कि ऐसा कुछ इंडियन मार्केट्स में हो रहा है। पीपल आर ऑब्जर्विंग दिस कि कोई तो मैन्युपुलेटर है जो इंडियन मार्केट्स में ऐसा कर रहा है। तो अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ उस आर्टिकल को, लेट अस गो थ्रू दैट कि व्हाट इज हैपनिंग, एंड लेट अस ट्राई टू गेट सम मोर इनसाइट्स कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा फायदा मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो जो आर्टिकल में लिखा है, which every seasoned, मतलब I don't know about retailers, but every professional setup guy, like who's traded options in a professional capacity, whose technicals are perfectly sound, who understands options pricing, जो भी uh, एक sort of solid options trading का बंदा है, he would entirely resonate with whatever has been written in the article. So I would really applaud Ken for that article. है? ओके सो They've नाइस। got in touch with the right people basically. Like it's absolutely logical. Everything they've written is perfect. Yes, and thanks for sharing with me, and thanks for agreeing to delve more deeper into this. So I'll just share my screen. We'll go through that so that people also understand because what is actually happening. So इस article का title है The Mystery Fund Playing God and Creating Havoc on the Stock Market, right? तो तबाही मची हुई है स्टॉक मार्केट में, बेसिकली आर्टिकल कह रहा है। एंड ये एक हाईलाइट कर रहा है फ्राइडे 13 को सेंसेक्स एक्सपायरी में क्या हुआ था, राइट? सो बेसिकली मैं सेंसेक्स में 13 एक्सपायरी में एक्चुअली क्या हुआ? 13th दिसंबर की जो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, उसमें क्या था कि पहले, अब जैसे मैंने पहले बताया आपको कि वो मैनिपुलेटर डिसाइड कर लेता है कि आज वॉलेटाइल कराना है कि क्वाइट कराना है। तो पहले
और मैंने ये भी बताया वो थोड़े थोड़े पैटर्न्स चेंज करता रहता है ताकि ऑब्वियस ना हो जाए कि वो क्या करने वाला है। तो इनिशियली वो बाहर बैठा हुआ था, उसको अब वी नो इन हाइंडसाइट, बट मैं जस्ट आपको ऐसे बता रहा हूँ जैसे जैसे मैं लाइव देख रहा हूँ मार्केट को। ओके, अब मुझे हाइंडसाइट में पता है कि क्या हुआ, बट लाइव अगर मैं देखूं मार्केट में तो क्या हुआ था कि इनिशियली उसने वो मार्केट नीचे लेके गया। ओके, इनिशियल आवर्स में वो मार्केट नीचे लेके गया है, उसे पता है कि वो इवेंचुअली ऊपर लेके जाएगा। ओके, वो he wants to take it to the upside, so he wants to buy the OTM calls at even cheaper prices. he he's made his mind up what he wants to do ultimately by the end of the day, and he's trying to maximize his profit by taking actions such that it maximizes his profit at the end of the day. So he initially took the market down, and he did not participate in the option space till then. Like the IV started falling. If you notice on the 13th of December, Yes. the IV started falling, and he took the market down. His intent was to buy those OTM calls at cheaper prices. So एक बार मार्केट नीचे लेके आ गया वो, उसके बाद उसने अपनी बाइंग शुरू की। ऑप्शन आईवीज वेंट थ्रू द रूफ, आई थिंक 9% या कहीं पे चल रही थी ऑप्शन आईवीज। दे वेंट टू आई थिंक 25%, 27%, 30%, ऐसी लेवल्स पे चली जाती हैं जो बिल्कुल ही बिजार लेवल्स हैं। दीज लेवल्स आर एक्चुअली सोनली रिजर्व, at least up till now they were solely reserved for days like budget days etc. Yes. ऐसे levels उन days को हाँ. belong करते हैं, they don't belong to normal days. So first he created the slide down move so that you could buy OTM calls even cheaper. Then he started his what he wanted to do, उसने अपने असली रंग दिखाई। he started buying his OTM calls। मतलब let's say मुझे लेवल्स याद नहीं है, बट लेट्स से हाइपोथेटिकली 70-80,000 पे लेट्स से सेंसेक्स प्रीवियस डे लेट्स से हाइपोथेटिकली चल रहा है, तो वो पहले 79-200 तक लेके जाएगा उसे, 1% 1% गिरा देगा, so that the 80,000 call becomes even cheaper, so that the 80,500 calls becomes even cheaper, 81,000 call becomes even cheaper. He wants to buy, so now he wants to maximize even the price at which he's buying the options. Okay, so he first created the down move, he let the walls fall, then he bought the RHS RHS meaning which are on the right hand side on the number line. So then he bought the 80,000 call, 80,500, 81,000. एक बार उसने buy कर लिए, that led to the IV skyrocketing from 9% where they were earlier to 25, 30%, 32%. ये बहुत high IVs है, बहुत unnatural है. This move which has been written in the article also is a greater than 3 sigma move in IVs. A 3 sigma Okay. move should ideally happen once in 300 days. Just understand the enormity of it. A 3 sigma event is a once in a 300-day occurrence, which is happening on practically every expiry day. So the article mentions all of this very beautifully. And he bought the options, the IVs came up, and then he moved the Sensex up, I think, from the low of the day to 2.25% up from there. This is what had happened on the 13th of December. So for the retail traders, who are listening to this, in case they have stop losses on the put side and the call side independently, okay, not as a straddle, but let's say they've shorted a put and a call and have individual stop losses on the put and individual stop losses on the call. So what would happen for them? Not everyone trades like this, but I know a large proportion of people also trade like this. So I'm referring to those people. Okay, तो उसमें क्या होता है कि अब पहले क्योंकि उसने वो फेक डाउन मूव कराया, so the put people get stopped out because that was also a reasonably okayish move. मतलब it was a 1% move on the downside. Okay, Yes. they got stopped out. And then he created the ultimate intention जो उसका finally था. He created the up move which was a 2.25% or so. I don't recall exactly, but it was something around this, this level, this magnitude. So he created a 2.25% up move from those levels such that all the calls would have got massively stopped out. So they got hit on both sides on such days. So this is what had happened on 13th December. In fact, this was also covered by Anuj Singhal on CNBC. So I have a clipping of on YouTube of Anuj Singhal wherein he's saying that this is a test case for identifying what is happening. It is not normal what is happening. It's a test case for identifying who is doing this. He seems to warn the retail traders that you are going to get stopped out, and this is now this is now a marketplace for large hedge funds to sort of compete. Uh, and there was no, so basically when a manipulator starts doing this, right, he's moving intraday 2% for no rhyme or reason. There was no nothing external sort of news coming in, no no result, no news of any sort that could have triggered this kind of a move. And yet this move came about. So when a manipulator can easily sort of just casually move the indices 2% and 1%, 2% down, and he can create 3 sigma level moves in the IVs. Then
then he's controlling the market, right? He's literally controlling the market. Like, why would you want to compete with him? So this is what had happened on the 13th. That first he created a fake down move, then revealed his true colors, bought the OTM options, OTM calls even cheaper, and then created the final up move, and which it was a massive up move. It was a massive. By the way, it's not that I'm talking from ivory towers here. So I was very actively involved in the market on all those days. So Yes. I know what was going on. It is scary. It is downright scary. So I fortunately I've stopped trading zero DT options since I've observed this happening. But for people who are trading it, I could understand, I could feel their mentality and their mindset absolutely getting scarred with what is happening. Actually it's been happening very frequently now. So since I think 1 in 3 expiries is volatile, 2 expiries are quiet. In the quiet expiries, he will not let the market move at all. In the volatile expiries, he will just kill you. So it's a very common phenomenon. So, see, you are saying that these guys also, the manipulators, are using different patterns. Sometimes they'll take the market directional one side, sometimes they'll move the market in the other side only to buy the options cheaper Yes, and yes, then yes, move the yes, yes, market in the other side. yes, So, I'm just yes, trying to yes. understand from the manipulator perspective. Suppose if I am the manipulator and if I can deploy 1,000 crores, how much amount can I make on such a day where because first I'm moving the market आपके against the आपके 500 crore भी बन सकते हैं. It is linked to the OI of the options. Okay, you okay, can make 500 crores. And supposing you bought 5,000 crores to take the market up. Okay, so let's say okay, leave aside 13 December for now, just to explain this concept which you asked. I'll just elaborate here. So let's say कहीं पे 24,000 पे मार्केट चल रहा है. ओके, एंड द मैनिपुलेटर डिसाइड्स कि 5,000 करोड़ का एक्सपोजर मुझे लगेगा 2% ऊपर लेके जाने के लिए. Okay, so he uses the 5,000 crores to take the market 2% up. Okay, his average buyer price would be from 24,000 to 24,000 plus 2%. So 24,000 plus 1% is his average buy price, okay, right? Because he's buying continuously, right? So इसका middle is his average buy price. yeah, And 24,000 plus 2% पे वो market को ले गया. He's expired his options and now he has to square off the cash position or the exposure that he has, क्योंकि वो exposure उसके options expire हो गए. राइट, अब उसे अगर उसे स्क्वायर ऑफ करना है 24,000 प्लस 2% पे मार्केट है, लेट्स ही स्टार्ट सेलिंग एंड ही स्टार्ट सेलिंग टिल 24,000 माइनस 1%. ओके, तो प्लस 2% से माइनस 1% मतलब 24,000 प्लस 0.5% उसका एवरेज सेलिंग प्राइस है. yes, गॉट इट, कि प्लस 2% से माइनस हाँ, 1% तो 24,000 प्लस 0.5% उसका एवरेज, तो उसका एवरेज बाय प्राइस इज 24,000 प्लस 1% एंड एवरेज सेलिंग प्राइस इज 24,000 प्लस 0.5%. Right? There's only a half a percent slippage on 5,000 crores. That is nothing. That is 25 crores. and 5,000 he's ka half a percent is 25 crore. It's 25 crores. Okay. And he can buy lakhs and lakhs of options. Supposing on one, and he can use all strikes. Okay. So let's say it was at 24,000. He bought 24,100 call of, say, let's say 15 lakh calls. He bought and expired at 24,500. Okay. So now, and he bought it for 25 rupees, which is expired 400 rupees in the money. So he's a 375 is made on every call. 375 he's made on every call. He has 20 lakh such calls. On one strike, he's made 75 crores. yes, Right? On one strike, he can do this for 24 150, 24 200, 24,050, 24,000, 24 250, 24 300, 24 350, 24 400. On one strike, in this example, he's made 75 crores. So versus the loss that I'm just sort of, maybe people might, maybe I'm sort of elaborating on something which people might not be entirely interested in, but still it is important to know that for him, the risk reward is absolutely beautiful. It's absolutely beautiful. He stands to lose 25 crores and he can make 75 crores, which is from a single strike. And this is for one strike. So he can have maybe, 8 such strikes. So there's no end. He can make 600 crores. कुछ है ही नहीं. yes. In fact, the article mentioned also that using this, they are making around 25,000 crore annually. Yeah, now I don't know how the article has come with that, but this is entirely possible. I don't know how they've arrived at the figure, but if I were to just see, I think they've just seen a top foreign hedge funds numbers here. They had made 1 billion as per the lawsuit which has got settled. They've made 1 billion last year. Okay, and this year their 9 month revenue is higher than what their whole year's revenue Yes, was last year. Right? They've revealed that number. I'm guessing you had a look at it. So in case then, and the manipulation has started this year actually.
They speak in calendar years. So because they speak from Jan to Yeah. Day. So manipulation will actually come in this year. So it wouldn't be surprising for me to assume that in case, they were making 1 billion last year and their overall revenues have gone up, let's say, by 60%, then firstly 60% to increase hey Indian options revenue say, but the market share of Indian revenues is also increased, dramatically, because so firstly there's an increase in the overall revenue of the fund you're talking about, and then the market share of Indian options in that revenue could have also increased. So it can Yes. easily be 3 billion, which is what the article has quoted. It's not off. It can easily be also because in case someone is the manipulator, then the manipulator, manipulation has started this year. It started this year. Mm. Okay. And as you But we mentioned, also don't the know. article says that Yeah, so someone can move the Nifty 2% is nothing short of God in the market. ये सही लिखा है ना, मतलब मैं तो बिल्कुल अग्री करता हूँ। Yes. मतलब आप, आई एम श्योर बहुत सारे लोग अग्री करेंगे कि अगर 2% कोई कैजुअली बस हिला सकता है मार्केट को अपने विम्स एंड फैंसीज पे, तो वो तो बहुत ही वो तो कोई डिवाइन फोर्स ही हो गया फिर। Yes. And see, you can see the article says that like manipulator might be making a profit of around 25,000 crore a year. So now this brings to me the question कि यार ये हो रहा है, ये काफी rampant है, and ये सिर्फ इंडियन मार्केट्स में हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है. So नहीं, ये कहीं नहीं होता। इट इज ओनली हैपनिंग इन इंडियन मार्केट्स। I can see I 25,000 crores. I don't know. Okay, but I'm just guessing how they would have thought about it. But the fact ये कहीं नहीं हो रहा, that I can vouch for. मतलब it is not happening anywhere. It should not happen anywhere. Okay, it's an aberration. Mhm. So now what can SEBI or the regulator can do about this? Because one thing they have done is कि they are advising retailers कि आप options कम करो, margins are increased, expiries का आपस weekly expiries reduce कर दी है. So other than this, but like as you said, they can do this in non-expiry days also. So हाँ, what वो can the कर रहे हैं। regulator do to keep this in check? No, the regulator has to sort of weed out the manipulator. He has to do it. It's not enough to, let's say, hypothetically, उन्होंने retail को protect भी कर दिया. Is it okay? Hypothetically, किसी तरह से assume कर लो कि retail के losses नहीं हो रहे. Just hypothetically, okay. But is it okay that, like, from a very emotional point of view, like as a public markets enthusiast, I'm not okay with the fact that someone is just destroying the fabric of the integrity of India's markets. Like it angers me. Really, it angers me that someone is just casually toying around with Nifty like like it's a, like children have those toys, right? They can just sort of play around with it, fiddle around with it. And someone is doing that with Nifty. It sort of boils my blood. It is the integrity and sanctity of India's markets that is hit. And I agree. Like obviously, I'm on the same page with SEBI that retail also needs to be protected. So I'm not taking anything away from that. But even if they are protected, it's not as if the integrity getting demolished is okay. It's not okay, right? Like हो सकता है रिटेल प्रोटेक्टेड है, बट ये अलाउड नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसे ही अपनी मन मर्जी से मार्केट को 2% हिला रहा है या उसे बिल्कुल हिलने ही नहीं दे रहा है. इट इज नॉट राइट. it is not. The idealist in me tells me repeatedly that this is not the way things should be. And for the retailers, I think SEBI has to weed out the manipulator, as I'm saying. It has to identify it, penalize it, ban it, and do. I also think actually the SEBI might have limited legal records here Yes. because the manipulators, in case they are foreign desks, then they're often based out of Singapore or Hong Kong, where India's jurisdiction and India's sort of capacity to take legal recourses will be limited. So, but they can obviously ban them. So, I think once the manipulator is banned, then things improve. Things improve because then the logical person at least makes money. Even then, the retail traders, only a small fraction of retail traders will be successful. But at least the logical ones who are doing the right things, who understand option pricing, at least they will be successful. Right now, even they don't have a chance because nothing of that sort is being followed. Okay, Mike. So you are saying that the SEBI has to intervene because this is not happening in any market. So SEBI has to make sure that they find whoever the person is, maybe one entity, maybe many entities, and ban them or do something that this manipulation stop, because this is now happening only in the zero DT. Possibly this might happen on others also. And like now stocks are relatively safer. Like there is more
prone to the index, but like as people start moving through the stock, this is possibility. Do they do this in stocks They also? can't move to Because stocks. I'll tell you why. They can't move to stocks. The moment people start moving to stocks a lot, like let's say index trading happens at a very high volume. The yes, moment people start moving to stocks, the market-wide position limit starts getting yes, hit. You see MWPL getting hit in smaller stocks like PNB, BEL, the yes, smaller names. If more now stocks volumes are a tiny fraction of index volumes. Okay. If people start participating in stocks, then the OI limit gets hit and yes, the stock goes in ban. So you can't move to stocks entirely. Another issue with stocks is that a lot of the audience would be hedgers. Like they would hedge also. Like let's say they've sold options close to the money or slightly OTM options. When the move comes, they would look to hedge or they would look to cut those options. Now stocks have unlike index. I know a lot of people have only traded index, so they don't know the nuances of stocks. Stocks have very poor liquidity. When the move comes, at that point in time when you want to get out, the walls, yes, it will kill you. The walls will be stretched a lot. The liquidity will be very poor in the options you're trying to cut. Unlike index, index is very liquid. Even in the case of a move, it is very liquid. yes, The IVs might spike up, but it is liquid at least. But there it will not be liquid also. You won't be able to exit, at least at large sizes. So stocks is not a solution. Plus, when this manipulation happens, violent expiry, quiet expiry, the stocks also move as a result. Ultimately, yes, those stocks get through index hill rise. So the stocks yes, also move. So the movement in the stocks picks up, which will lead to people getting stopped out here and there, right? Because मूवमेंट हिल रहा है वो स्टॉक उसने 2% ऊपर जा दिया तो निफ्टी ऐसे खुद से तो जा नहीं रहा मतलब इट्स ऑब्वियसली टेक सम components of Nifty are also they have to move for Nifty to go up to 2.2% or whatever. So yes. people will get stopped out in stocks also, and they will not find volumes there. Plus, if there is a transition from index to stocks, the MWPL will anyway get it. So stocks does not serve as a despite at least to absorb the amount of people trading or the enormity of the size that index trading happens in. Stocks can't absorb that. Mm. Okay, Mike. So, like, what I can understand is like the manipulator is so big for him, like the volumes they deploy, like they'll have to specifically stick to the index only. And like going forward, I think it's up to SEBI that they do some measures that this like manipulation stops because since last 6 months it's almost happening on every expiry, be it like Fin वो Nifty, हर mid expiry पे हो caps. रहा है. You will see no expiry is normal. It's exclusively मतलब I don't know if you've seen my LinkedIn post, but it's either or. It's either or. मतलब it's either very volatile or it's very Yeah, quiet. Okay, it's just either or. Now you would even a layman, I speak to my dad and even he realizes कि यार ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है and he's not into options trading or anything. yes, Even laymen realize that बड़े moves केवल expiry day पे आ रहे हैं. Okay, Malab, if you see the period from, I think I had done this analysis, I don't recall the exact dates, but I think from 21st November to I think to 13 December or something, it was a period of 16 trading sessions. And the top four trading moves were all on expiry days. okay, So they were all on expiry days, Nifty or Sensex expiry days. And so बाकी दिन moves आ नहीं रहे expiry day is ideally not is not supposed to be different from normal day. ऐसा थोड़ी ना कि कुछ अलग हो रहा है. आपके volumes options में हो रहे हैं मगर cash पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उससे. अब the only thing that will happen is कि लोग थोड़े stop out होके एक side पे थोड़ा pressure create करेंगे but typically what happens in those cases is a temporary moves get created with reverses. If stop losses are getting triggered, there'll be a temporary sort of quick move on the upside. Let's say false stop losses get triggered, people will buy calls, a temporary spike on the upside in the market, which will in 10, 15 minutes it will normalize and it will come back. But what is happening now is not that the market keeps going in one direction, which is someone's doing. It is someone's doing. It's not stop losses getting triggered and them automatically series of stop losses getting triggered and the market going up. ऐसा नहीं हो रहा है. And anyway, as I said earlier, people are covering now. So stop losses are getting lesser hit because they are stopped out by themselves by virtue of the position they establish. okay, Maya. And thank you so much for your insights, the way you explain things, how these things happen. Like, in fact, I was also wondering how is it possible that this is happening so frequently, but the way you explained, I'm sure the audience must have learned something new. And other than this, like what I understand is like as a trader, we don't have much to like we can't do much about this. The You can't. regulator has to do something and make sure that this actually stops in the days to come. Yes, it is in the regulator's court now. Like
Uh, it's, by the way, I would like to just say that this is like, it's options trading is a relatively small community, right? But if I look at India as a destination in terms of investment, okay, now there are several global funds, they sort of asset allocate across geographies, like whether they want to invest in Japan or US or India or whatever. Now they see returns per unit volatility. That is the measure of risk. Like if an FD returns 7%, right? For something which is riskier, you would want 10%, right? FD, assuming FD is like risk free, hypothetically, okay, like it's a government bond, let's say hypothetically, okay, so it's a risk free government bond which is delivering you 7%. Now, in case there is added risk, you would want more than 7% because the bond itself is, without taking any risk, you're getting 7%. So, in case you're taking higher risk, you need 10%. In case you're taking further higher risk, you need 13%. In case you're taking further higher risk, you need maybe 16%. Okay, so the level of return that investors expect of markets is linked to the volatility of the markets. Now, what Yes. is happening with all this is India's volatility on a day-to-day basis is increasing. Okay. And in case the returns, so the manipulator does not net buy or sell. He will square off. So net long-term returns he will not impact, but he will increase the volatility. So returns stay the same and volatility increases. So India's measure, in the measure of returns by volatility, India falls in the pecking order. And it's a, I'm while I know we were discussing options traders largely, but this is a big thing from a macro perspective. Okay, so this you are saying that from like other like investor, global investor standpoint also, like they would be less attractive towards India given the volatility. Yes, the same returns for higher volatility puts India lower in the pecking order, right? Because as I explained, if the volatility is high, you want higher returns. The returns will stay the same because net inflow outflows, he will in case manipulator buys, he will sell also. So he will net keep zero. So inflow is not coming. Returns stay the same, volatility increases because of his actions, which is why India's attractiveness falls. Okay, so like not only options, but this will overall affect the Ah. Indian market. So like I think Mhm. it's high time that SEBI takes some action against this. And Mhm. thank you, Mayank, for sharing your insights, the way you explain everything in detail. I'm sure the audience would have found it very insightful. And if they like reply in the comments, then like we would like love to do one more show, like discussing more about options or more about any specific topic that might interest. Because you mentioned IVs a lot. Just like before we end this video, any specific book you want, because in India people generally trade on premiums, like the retail traders. So I, if they can want to learn more about IVs, any specific book, because I have read Sheldon Nettenberg. Like if you recommend that or any other book you would like to recommend to the Sheldon audience. Aidenberg is good. Hull, मैं तो खैर मैंने तो मतलब I started off with Hull. Hull is a basic in like MBA book which is there in the curriculum itself. So I had started off with Hull, and Sheldon Aidenberg is also a good book. Uh, uh, I think these books suffice. More they in case one goes to both the books, that is sufficient. Basically, IV will combine things like distance from the stock price, how far the strike price is, how many days there are to expiry, and then evaluate, the expensiveness of the option. So it will sort of combine all the parameters, with respect to the distance between the stock and the strike, the days to expiry, and all of that, and then tell you how cheap or expensive the option is. Okay, जिनको भी It's IVs it's के a बारे में, measure of movement. It's a measure of movement. Mhm. yes, basically जिनको भी IVs के बारे में समझना है, जॉन सी एल की बुक एंड शेल्डन नेटनबर्ग, ये दोनों बुक्स यू कैन रीड. And thank you, Mang, again for giving your valuable time and sharing your insights. Thank you, Saurabh, for having me. It's a pleasure to speak with you. Thank you. Thank you.